Things are quite rowdy here. The Hindu community came out in the thousands. हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा. We done this rally here today to showcase how we were discriminated against. It is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police. Foreign people, they were able to divide us and rule us. And exactly that's what's happening in Canada now. से जब मैपल तिरंगा रैली हुई थी तब से ये घटनाएं जो है क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं और डे बाय डे ये घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं. वो हमारा वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक और कितना भाई ब्रांड बन गया तब लोग पूरी तक नारा जाना चाहिए. जय श्री राम. अच्छा दोस्तों, एक और मैं As we can see, after the incident of yesterday, today in Hindu Sabha Mandir, a lot of people have been gathered and they are showing their solidarity towards the Hindu rights protection. It is against any human cause that you are trying to put down a huge community which is participating in the construction of Canadian system. Things are quite rowdy here. The Hindu community came out in the thousands. There's like a couple thousand here, a few thousand more down there. The temple's packed, outside's packed. Very strong messaging from the community. They want Canadian politicians to grow a spine and name the problem, and that is Khalistani extremism. Khalistani radicals are bringing Khalistani flags and assaulting people with flags made of wood that say Khalistan on them, and no political party can say what's actually happening. There are two MPs, Kevin Vong and Chandra Arya, who have, and they've been thanked, but same has come out from the entire set of Hindu Mondars. They're not allowing politicians in anymore to pander to the community if they're not going to meet the most basic needs of the community, which is they must be free to practice what they want to do in the religion. And you don't have freedom of religion if you have Khalistani lunatics breaking into the Mondars, whacking everyone, smacking everyone. It's not good. The same thing happened. Our churches are being burned in Canada. It's not cool. Synagogues are being shot up, and Hindu temples are now being attacked by lunatics. This cannot stand, and tonight was an incredibly strong message from the United Hindu community, which saw Sikhs here, Jains, of course, Buddhists, Jews, Iranians, Christians. This is a much better indicator of who Canada is. It's a group of united religions standing to defend a temple rather than a few dozen radicals funded by, let's be honest, the ISI and the CCP coming to attack them. So it was a great time. I was proud to stand here with my Hindu brothers and sisters and send a message to Canada that freedom of religion is here to stay and we are strongly united. आज यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है. हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा. ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया. आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे ये शुरुआत है. इसको एक इंसिडेंस ना समझें. जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज़ बहुत ज़रूरी हैं.
हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा को नुकसान कर रहे हैं। तो हिंदू कैनेडियंस हमेशा कनाडा के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। थैंक यू। Hello, my brothers and sisters from Canada. I am a Hindu Canadian, and we are gathered here in anguish today to protest what happened with us yesterday. It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. We've done this rally here today to showcase how we were discriminated against by the police yesterday. And despite that, all our Hindu brothers and sisters have gathered here peacefully, protested here peacefully. We did not go and attack any temples or gurudwaras or synagogues or mosques. We don't hate people. We are asking for a right. We are a community with the least amount of crime, almost zero, and we are the highest taxpayers in the country as a community. So please, this is an appeal to the mainstream Canadian that please stand with us in this time of need and hour, and let's make Canada what it is, because the values that we bring to the community are enshrined in the Constitution of Canada. Thank you. खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो खालिस्तानी मैनेजमेंट में हो, उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि इनको आके मारो, इनको हिंदुओं को डराओ, और उसी मकसद से लोग यहाँ पे आए थे। अभी पता लग रहा है कि एक पुलिस वाला जो कि पुलिस वर्दी में नहीं था, उसको सस्पेंड किया दिखाने के लिए, लेकिन कम से कम 3 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी पिक्चर है, उनका बैच नंबर है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो बार बार ये बोल रहे हैं हमने 3 को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि खालिस्तानी जो 17-18 लोग थे जिन्होंने डंडे से बरसाए, उनका क्या हुआ। कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है, वी विल बॉयकॉट ऑल द पॉलिटिशियंस। आज यहाँ पे कम से कम 1200 से 1500 लोग थे, लेकिन एक भी पॉलिटिशियन जो अपने आप को एमपीपी या एमपी बोलता है वो यहाँ पे नहीं आया। उन्होंने ट्वीट करना चालू कर दिया होगा, पर यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई आदमी यहाँ पे नहीं था। जय श्री राम। मेरा नाम अंजलि शर्मा है ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਦ ਸੇਮ ਫॉर मी। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਈ ਜਸਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਨਾਟ ਹੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ, ਨਾਟ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. Synagogues, mosques and churches may have the power to give one suggestion and whole community follows that. I find it strength of Hindu community that we don't become the herd, that one person says something and we follow. No, we have our head. We know how to think. Also, when it comes to organizations, we need to strengthen organizations. There are organizations who do specific work of Kshatriya Dharma. What is Kshatriya Dharma in today's world? You will not do with the spears and swords and sorrow. You do it with advocacy. My name is Harji Bajwa and I represent Hindu Sikh Unity Forum Canada.
We started that about a year and a half ago, and we are very determined to unite Hindu and Sikhs together. We've been together for centuries, and there's some politicians who are trying to divide us. So we're going back, our forefathers were in slavery because the foreign people, they were able to divide us and rule us. And exactly that's what's happening in Canada now, that they're trying to divide us again so they can really, we'll be like, there's a million Hindus and a million Sikhs together. Together we'll be a force to reckon with. And if we are separated, if we hate each other, then we'll be almost zero. So that is my goal, to unite Hindu and Sikhs together. We are very disappointed. Myself, Vijay Jain, on behalf of Hindu community here. What happened, the way police acted, the police did the brutalities on our community people, and then very, very pathetic behavior of politicians. They are not calling out and they are supporting the terrorist elements here. This is beyond pathetic. And what Canada is doing, if we don't feel like we are living in a developed world or we are living in a country where there is a law and order. So I urge people across the world to look at this, what Canada has become. The way Canadian police did brutalities on our Hindu devotees is beyond imagination. We are deeply hurt as Hindu community what has happened here yesterday, and we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada, and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere. And it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a two-tier policing that we have seen. You would have seen videos all around circling, and we have come here in support. All we are asking is justice to be served, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. इस समय हम हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में सारे लोग प्रेजेंट हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। कल जो हुआ, इट वाज ए वेरी वेरी सैड न्यूज़ कि कुछ खालिस्तानी तत्वों ने हिंदू मंदिर पर अटैक किया यहाँ ब्रैम्पटन में, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सिख समाज पे नहीं, ये सारी दुनिया पे और गुरुओं के पवित्र नाम पे कलंक हैं, जो इस तरह की हरकतें करके सारे सिख समुदाय का अपमान कर रहे हैं, गुरुओं का अपमान कर रहे हैं और हिंदू सिख यूनिटी के ये लोग अगेंस्ट हैं। तो बड़ी शर्म की बात है और हमारे लिए दुख की बात है। और यहाँ कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स across all political parties, unfortunately they have been pampering these extremist elements for their political advantage, which is really unfortunate. हाँ जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज़ पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना, जहाँ एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना, वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज़ एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट कैनेडियन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि जो लोगों का ये विश्वास जो कनाडा की अथॉरिटीज़ में से गुम हो रहा है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के कनाडा को एक बेहतर जो कंट्री था उसको दोबारा रिस्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। जो कुछ भी हो रहा है वो ना इंडिया के लिए अच्छा है ना कनाडा के लिए अच्छा है। वी आर बीइंग डिवाइडेड बाय सर्टन पीपल,
not everybody is thinking same way. तो ये सब रुकना चाहिए, हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, दोनों नेशन की दोस्ती भी बड़ी रहनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें हिंदुइज़्म को सपोर्ट करना है। कल जो कुछ भी हुआ मंदिर पे अटैक करके वो गलत था। Canada provides a freedom of speech, but it doesn't mean that you can go to certain extent. ये जो भी मूवमेंट है वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए। Everybody has a right to do movement, but it should not cross their limit. क्या छोड़ रहा क्या छोड़ा मेरा यार है अजय बिजनेस बना रहा है क्यों बिजनेस मम्मी खड़े हो रहा मिनट करवा लखन करोगे ठीक है मन नहीं बोले मम्मी खड़े हो रहा है एक आदमी बोल रहा है 1 घंटा हो गए